हेलो गाइज। तो आज केमिस्ट्री का और कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ये सब मतलब एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है। जितने भी 11-12 का जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर का हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन करके उठाया है। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो pH जो है, pH ऑफ 7 इज न्यूट्रल एट रूम टेम्परेचर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7. Next question is the pH of a solution. pH of a solution is defined as, so pH of a solution is defined as minus log 10 H positive. Option C is correct. Next question is a solution has H positive. A solution has H positive equal to 1 into 10 to the power minus 3 m. Its pH is, तो इसका अगर pH का वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो द सोल्यूशन H पॉजिटिव दिया हुआ है, तो pH का फॉर्मूला आता है pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। तो इसको अगर बिठाए माइनस लॉग 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ऑप्शन आएगा 3. ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो H2CO3 CH3COOH, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये आयोनाइजेस कम्प्लीटली इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बफर सोल्यूशन। ए बफर सोल्यूशन ऑप्शन दिया हुआ है मेंटेन्स कांस्टेंट वॉल्यूम, मेंटेन्स कांस्टेंट pH, इंक्रीजेस रिएक्शन स्पीड, इज ऑलवेज बेसिक। तो ए बफर सोल्यूशन मेंटेन्स कांस्टेंट pH, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए बफर सोल्यूशन मेंटेन्स कांस्टेंट pH। Next question is which of the following is a buffer solution? Which of the following is a buffer solution? तो ऑप्शन दिया हुआ है NaOH, HCl, NH4OH and NH4Cl, HNO3, NaCl, H2SO4, NaOH, NaNO3। तो which of the following is a buffer solution? तो बफर सोल्यूशन बनता है वीक बेस प्लस सॉल्ट से। इसका सॉल्ट से, वीक बेस का सॉल्ट से बनता है बफर सोल्यूशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वीक बेस प्लस बफर सोल्यूशन, weak base plus salt equal to buffer solution. Next question is Ka and Kb. Ka and Kb equal to, so product of acid into product of acid and base equal to dissociation constant Kw. Option B is correct. Next question is equilibrium constant. The equilibrium constant for a reaction is 1. What does it mean? The equilibrium constant for a reaction is 1. What does it mean? Option दिया हुआ है only products are formed, only reactants exist, products equal to reactants concentration delta G greater than 0. So the equilibrium constant for a reaction is 1. What does it mean? Option C is correct, products equal to reactants concentration. Next question is KSP refers to. KSP refers to, तो KSP जो है ये solubility product constant है। solubility product constant refers to, ऑप्शन दिया हुआ है solubility, ion product, solubility product, ऑप्शन C is correct, solubility product. Next question is solubility of a salt decreases in solution having common ion because of. Solubility of a salt decreases in solution having common ion because of Le Chatelier's principle, first law of thermodynamics, Dalton's law, Henry's law. तो ऑप्शन ए is correct, Le Chatelier's principle. Solubility of a salt decreases in solution having common ion because of Le Chatelier's principle. Next question is KW at 25 degrees Celsius is. So KW at 25 degrees Celsius is option B is correct, 10 to the power minus 14. तो KW का मतलब होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस में अगर निकाले आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो KW इक्वल रहेगा
H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। तो H पॉजिटिव का वैल्यू है 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 OH निगेटिव। तो इसका आएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट 10⁻⁻14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द pOH of a neutral solution at 25 degrees Celsius? What is the pOH of a neutral solution at 25 डिग्री सेल्सियस? तो ऑप्शन दिया हुआ है 0, 7, 14, 1। pOH निगेटिव, इसका वैल्यू है 10⁻⁻7। तो ऑप्शन 7 इज करेक्ट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज conjugate base of H2CO3 is conjugate base of H2CO3 is ऑप्शन दिया हुआ है HCO3 निगेटिव, CO3 2 निगेटिव, H3 CO3 पॉजिटिव, OH निगेटिव। तो conjugate base of H2CO3 is ऑप्शन A is correct, HCO3 निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोंस्टेड एसिड इज ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रोंस्टेड एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। तो ब्रोंस्टेड एसिड जो है ये डोनेट करता है प्रोटॉन H पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन आयन इफेक्ट सप्रेसेस। ऑप्शन दिया हुआ है प्रिसिपिटेशन, आयोनाइजेशन, सोल्यूबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। तो कॉमन आयन इफेक्ट सप्रेसेस precipitation, ionization, solubility. Option D is correct, all of these. Next question is the pH of a buffer is calculated using option दिया हुआ है Henderson, Haslebelch equation, Raoult's law, Nernst equation, Charles law. तो the pH of a buffer is calculated using, तो option A is correct, Henderson and Haslebelch इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन है pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग इनटू के बाद आएगा सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट pH? तो लोएस्ट pH किसके पास है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट pH? तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसका है लोएस्ट pH। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? लोएस्ट pH। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन देखें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक ट्रिक है वेल रिग। ऑक्सीडेशन वो मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन। तो इसको याद रखिएगा, वेल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन। तो इन ए रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसीज व्हिच अंडरगोज रिडक्शन। तो रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन मतलब होता है वेल रिग, oxidation is loss and reduction is gain. Reduction is gain electron. Option A is correct. The species of which undergoes reduction, gain of electrons. Next question is in the reaction. तो in the reaction एक रिएक्शन दिया हुआ है, बोला है कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यह देख सकते हो Zn जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, Zn। एंड CO2 को अगर देखें ये रिड्यूस हुआ है, CO2 पॉजिटिव आयन दिया हुआ है, यह रिड्यूस हुआ है, Cu हुआ है, एंड Zn जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन इन प्रोडक्ट। इसका जो प्रोडक्ट बना है उसमें जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ऑक्सीडाइज। तो इसमें बोला है सेम रिएक्शन, तो ऊपर में जो रिएक्शन मिला है कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस हुआ है तो यहाँ देखा तो ऑप्शन Cu2 पॉजिटिव जो है ये रिड्यूस हुआ है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स रिड्यूस इन प्रोडक्ट। तो ऑप्शन इसका होगा 2 पॉजिटिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
तो Cu 2 पॉजिटिव जो है गेन्स इलेक्ट्रॉन गेट रेड्यूस, ऑप्शन बी सी इज करेक्ट। एंड पहला वाला का जो है ऑक्सीडाइज हुआ है जिंक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन H2O2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो ऑक्सीजन जो है हैज़ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है H2Cl2 2HCl NaOH HCl, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, एंड इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हाइड्रोजन है 2 × 1 एंड ऑक्सीजन का है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 × 4, तो इसको अगर निकाले तो सल्फर का होगा 6, 2 and 8 +6 आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, +6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट gains electron is always acidic, loses electron and gets oxidized, except electron and gets reduced. Option C is correct. A reducing agent loses electron and gets oxidized. A reducing agent loses electron and gets oxidized. Next question is in redox reaction, electron transfer occurs between acid base ions only, two different compound oxidizing and reducing agent. In redox reaction, electron transfer occurs between oxidizing and reducing agent. Option D is correct. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है गेन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर बेस्ड ऑन precipitation, ionization, redox reaction, adsorption. तो इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोड जो है ये इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन फॉर्म्स 4 covalent bonds because of its monovalency, tetravalency, bivalency, trivalency. So carbon forms 4 covalent bonds because of its, option B is correct, tetravalency. तो कार्बन के पास है 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो फॉर्म्स 4 covalent bond, ऑप्शन बी इज करेक्ट, tetravalency. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ मीथेन मोलिक्यूल CH4 इज टेट्राहेड्रल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेट्राहेड्रल, एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए मोलिकुलर फॉर्मूला, कौन सा ऑप्शन में से कौन सा मोलिकुलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, C3H8। तो मोलिकुलर फार्मूला जो है ये टोटल नंबर ऑफ एटम हम लोग को देता है, तो मोलिकुलर फार्मूला गिव्स टोटल नंबर ऑफ एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो डबल बॉन्ड दिया हुआ है एल्कीन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू, ऑप्शन दिया हुआ है सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट, डी डिफरेंट एलिमेंट्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेम molecular formula but different arrangement. Structural isomerism arises due to same molecular formula but different arrangement. Next question is which of the following show position isomer, कौन सा position isomer को शो करता है। तो ऑप्शन इज यहाँ अगर देखें इसमें भी सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें तो नहीं है,
इसमें भी ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेम फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी दिया हुआ है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन, तो ये है पोजीशन आइसोमर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is used for purification of solid organic compound, which is used for purification of solid organic compound, ऑप्शन दिया हुआ है डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी। तो which is used for purification of solid organic compound, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो है ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है जो फॉर प्यूरिफाइंग सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is used for the separation of volatile components from non volatile impurities, तो कौन सा यूज़ किया जाता है ऑप्शन में से नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, वोलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। क्वेश्चन ऑप्शन इज दिया हुआ है फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, एक्सट्रैक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो है ये सेपरेट volatile components from non-volatile impurities by boiling. Next question is which method is used to separate pigments from plant leaves? Which method is used to separate pigments from plant leaves? ऑप्शन दिया हुआ है sublimation, distillation, chromatography, centrifugation. ऑप्शन सी इज करेक्ट, chromatography. Which method is used to separate pigments from plant leaves? ऑप्शन सी इज करेक्ट, chromatography. तो क्रोमेटोग्राफी जो है ये सेपरेट करता है कलर्ड मिक्सचर, फॉर एग्जांपल पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एलिमेंट इज डिटेक्टेड बाय लेसेग्नीज टेस्ट, ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो व्हिच एलिमेंट इज डिटेक्टेड बाय लेसेग्नीज टेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाइट्रोजन। तो लेसेग्नीज टेस्ट जो है ये डिटेक्ट करता है नाइट्रोजन एंड सल्फर को एंड हेलोजन को, जो हेलोजन ग्रुप है हेलोजन को भी डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो आयोपिक नेम बताना है मीथेन, इथेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इथेनॉल। तो 2 कार्बन अल्कोहल है इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज बॉन्ड CHO, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री रेडिकल is a species that contains lone pair negative charge, unpaired electron, positive charge. तो free radical is a species that contain unpaired electrons, ऑप्शन सी इज करेक्ट, unpaired electron. तो free radical जो है ये free radicals are highly reactive due to unpaired electrons. Next question is which type of reagent attacks electron rich center? Which type of reagent attacks electron rich center? ऑप्शन दिया हुआ है न्यूक्लियोफिल, इलेक्ट्रोफिल, फ्री रेडिकल बेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इलेक्ट्रोफिल। Which type of reagent attacks electron rich center? इलेक्ट्रोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which reagent is nucleophilic in nature? ऑप्शन दिया हुआ है Na2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, AlCl3H पॉजिटिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट, Cl नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफिल जो है डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियोफिल जो होता है ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो Cl नेगेटिव इज ए न्यूक्लियोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोपिक नेम बताना है, तो 3 कार्बन दिया हुआ है मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड 1 डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो प्रोपीन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज elemental analysis gives molecular mass, structural formula, percentage of composition of elements, molarity. So elemental analysis gives, option C is correct, percentage composition of elements. Next question is correct decreasing order of priority of IUPAC naming is. तो इसमें अगर देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, कार्बोक्सिलिक हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन नेमिंग। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी इज करेक्ट, COOH, CHO एंड OH. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट टू डिटेक्ट नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोलिश, टोलेंस, लेसेनिक्स, फेलिंग्स। तो पहले भी मिला है फेलेसेनिक्स टेस्ट।
The test to detect nitrogen in an organic compound is Lessegnis टेस्ट. ये सल्फर, नाइट्रोजन एंड हेलोजन जो एलिमेंट है, हेलोजन का एलिमेंट है, उस सबको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज solubility difference, melting point, boiling point, density. So the basic principle of chromatography is option A is correct, solubility difference. Next question is hydrocarbons. Hydrocarbons are made up of only carbon and hydrogen. Option देखे तो option carbon and hydrogen. Option A is correct, carbon and hydrogen only. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केन. कौन सा एल्केन है? तो CH4 मीथेन जो है इज एन एल्केन. ओनली सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, CH4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स. एल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH twice n plus 2. एंड एल्केन्स जो है ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन अगर देखें ऑप्शन ए इज करेक्ट, CnH twice n plus 2. Next question is ethane. Ethane C2H4 contains. So ethane one double bond. Option B is correct. One double bond. Next question is which of the following is an unsaturated hydrocarbon. कौन सा unsaturated hydrocarbon है? तो alkenes and alkynes. Alkenes and एल्काइन जो है दे आर अनसेचुरेटेड, दोनों अनसेचुरेटेड है, तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इथिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्काइन हैज़ हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन वन ट्रिपल बॉन्ड. एल्काइन जो है कितने पाई बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में, वन ट्रिपल बॉन्ड में, तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन तो वन ट्रिपल बॉन्ड जो है वन सिग्मा बॉन्ड रहता है एंड टू पाई बॉन्ड रहता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईयूपैक नेम बताना है, तो 2 कार्बन दिया हुआ है एंड ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है. एल्काइन, मीथेन, इथेन, इथाइन. ऑप्शन इथाइन, ETHYN, इथाइन. 2 कार्बन दिया हुआ है एंड ट्रिपल बॉन्ड एक दिया हुआ है, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following shows aromaticity. Which of the following shows aromaticity. तो ऑप्शन दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, हेक्साइन, ब्यूटीन. ऑप्शन बी इज करेक्ट, बेंजीन. 6 membered ring है. बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड contains 6 membered ring and delocalized pi electron. Next question is aromatic hydrocarbon obeys octet rule, Huckel's rule, Lewis rule, Boyle's rule. Option B is correct, Huckel's rule. Next question is benzene contains. तो बेंजीन कंटेन करता है, पहले भी एक बार बोला है, delocalized pi electrons. Option C is correct, benzene contains delocalized pi electron and contains 6 membered rings. 6 membered ring have benzene. Next question is alkenes show which type of a reaction. Alkenes show a which type of reaction. ऑप्शन दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, एलिमिनेशन. तो डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफिल. ऑप्शन बी इज करेक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which test is used to detect unsaturation in hydrocarbons. ऑप्शन दिया हुआ है फेलिन्स, ब्रोमीन, टोलेंस, बुरेट. तो which test is used to detect unsaturation in hydrocarbon. ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट. तो ब्रोमीन जो है ब्रोमीन ये डीकाराइज्ड हो जाता है बाय एल्किन्स एंड एल्काइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is more reactive towards addition reaction. which is more reactive toward addition reaction. ऑप्शन दिया हुआ है एल्केन, एल्कीन, बेंजीन, साइक्लोएल्कीन. ऑप्शन बी इज करेक्ट, एल्कीन. तो एल्कीन के पास है पाई बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट्स रेडीली अंडरगो एडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज acetylene is used in fuel for rocket, oxygen cylinder, welding, soap making.
Option C is correct. Acetylene is used in welding. Next question is, which hydrocarbon is carcinogenic? Which hydrocarbon is carcinogenic? ऑप्शन दिया हुआ है बेंजीन, इथीन, मीथेन, इथाइन. तो ऑप्शन which हाइड्रोकार्बन इज कार्सिनोजेनिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेंजीन. तो बेंजीन का जो है इसका डेरिवेटिव्स है कार्सिनोजन, कैंसर कॉजिंग. ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो ये था टोटल क्वेश्चन, शायद 300 प्लस क्वेश्चन होगा. तो टोटल तो लिखा नहीं है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.